once again to our second video of Arduino microcontroller. I am Subbu Tarang, the mentor of Innovation Hub Itanagar, Department of Science and Technology, Government of Arunachal Pradesh. In previous video, we have seen the introduction of Arduino microcontroller and the use of this microcontroller. So in this session, we will be discussing on the hardware part and the software part of the Arduino microcontroller. So this is our hardware part of our Arduino microcontroller. Here we can see we have several types of electronic device, or we can say chips, attached in this Arduino PCB. First of all, we will go with this pins. There are three type of pins. One is your power pin, analog pin and digital pin. So we have Arduino pins, power pins, which consist of three ground pin. Ground is for negative terminal. Here the most important part is your processor. We can say processor in terms of computer. So here we have this IC, integrated circuit, which is Atmel AT 328. We have two output voltage pin, that is 3.3 volt and 5 volt output pin, and we have one input voltage input pin, V in pin, which Arduino can take maximum 12 volt input and can give out maximum 5 volt of output. Now we have this analog pin and digital pin. First of all, we will see what is this analog pin. We have total of 6 analog pin, that is from A0 to A5, and analog pin is used for controlling the speed of your motor or the dimming of your LED light, etc. That means here the voltage can be vary, so we can adjust the voltage according to our needs. So digital pin is basically a binary pins. That means any sensor or any device which we will use for on or off. The only operation we will use is to on or off. So in that type of operations we will use this digital pin. We have total 14 digital pins, starting from 0 to 13. Here one 0 and 1 pin is mainly used for your wireless communication. Here we can see 0 is written as RX and 1 is written as TX. So RX क्या है? RX जो है receive of data and TX जो क्या है? That is transmission of data. So anything we will connect in future. कोई भी project बना रहे हैं हम लोग, suppose we want to build a Bluetooth car or anything, so we will use these two pin to communicate with the Bluetooth wireless device. And we have other pins. In digital pin we can see there is a symbol in front of 3, 5, 6, 9, 10, 11 pins. These symbols represent as a PWM pin, which means pulse width modulation. Pulse width modulation means we can control the voltage. It's work same as an analog pin. So we have one USB jack, जिसमें से हम USB कनेक्ट करेंगे and we will program our sketch. जो प्रोग्राम होता है उसको हम लोग बोलते हैं sketch. So हम लोग क्या करेंगे, that sketch we will type in computer and that sketch we will upload in microcontroller using that USB jack. And we have one DC power jack. We can take maximum of 5 volt input, and we can use this DC jack. आप जो चार्जर होता है मोबाइल का चार्जर, we can use that charger in here also. And we have one reset button. ये जो reset button क्या करते हैं कि आपका जो प्रोग्राम लिखा है वो प्रोग्राम का हम लोग क्या कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं. When you press that button, the program, that operation will be reset and it will start from the starting point. So this was all about the parts of Arduino. There are lots of parts, but we will not discuss in all the details. So for the beginning, for the basic, this much of pin and knowledge is required.
and in future we will see in more detail. So now we will move on to our software part. Here I will tell you how to download this Arduino and how to install your Arduino in your computer or in your laptop and use it for programming. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है गूगल पे और वहाँ पे आपको सर्च करना है, टाइप कीजिएगा वहाँ पे डाउनलोड आर्डिनो। तो आपको जो पेज आएगा सबसे पहला जो आ रहा है सॉफ्टवेयर आर्डिनो, उस पर क्लिक करना है और ये जो अपना ऑफिशियल पेज पे आ जाएगा आर्डिनो का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड ऑप्शन में बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें से आपको अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस हिसाब से विंडोज पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे डाउनलोड जस्ट सिंपली आपको जस्ट डाउनलोड में क्लिक करना है, नो नीड टू कंट्रीब्यूट। और जैसे क्लिक करते आप नीचे पे देख रहे हैं यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। देन डाउनलोड के बाद आपको उस पर राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं करके सीधा ओपन पे क्लिक करना है। और ये जो आ गया सेटअप, इस पे आई एग्री में क्लिक कीजिए, देन जस्ट क्लिक नेक्स्ट नेक्स्ट। और ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में। तो जैसे इंस्टॉल हो जाता है आप क्लोज पे क्लिक कर दीजिएगा। नाउ योर आर्डिनो इज इंस्टॉल्ड। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट में जाना है और आपको सर्च करना है आर्डिनो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे आर्डिनो आईडीई खुल रहे हैं और जो ये आपको दिख रहा है दिस इज योर आर्डिनो आईडीई। यहाँ पे हमारे पास मेन्यू बार है, फाइल में ऑप्शंस है, ओपन करने का एग्जांपल्स बहुत सारे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अपलोड करना है, सेव करना है, ओपन करना है, बहुत सारा ऑप्शंस है। जो इंटरफेस है इसके बारे में हम लोग फर्दर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। So this was all about the hardware part and the software part of our Arduino microcontroller. So in next video we will see how to program this Arduino, and we will try to make one small LED blinking project. So please follow our channel and like our channel, subscribe our channel to get such type of more content, and thank you for watching our video.